important topic. So the topic is what if Nota wins. Now we will understand a bit about the history of this, how Nota came into the picture. So if we talk about the pre-constitutional era, so basically जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1957 में और उसके बाद 1951 में हमने एक लेजिस्लेशन पास किया जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब इस लेजिस्लेशन को लाने का बड़ा सिंपल सा रीजन था। वो रीजन ये था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द लेजिस्लेटर्स हु आर गोइंग टू फाइट द इलेक्शंस। सो इसके लिए बहुत सारे रूल बनाए और इवेंचुअली एक फेमस अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में which is called as a 10th schedule anti defection law. Now anti defection law यही बोलता है कि हमारे legislators पार्टी ना चेंज कर लें, right? Because there had been instances where legislators are changing the parties, because of which we brought the anti defection law. Now why are we bringing all of these things, right? So why? Because we have a doubt in our legislators. So all those who are fighting the elections, the public is not fully confident in their legislators, and that is why they are bringing all of this legislation. नाउ ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 जो है वो बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि एवरीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स कैन पार्टिसिपेट इन द वोटिंग। तो राइट नाउ वी कैन सी दैट 5 ईयर जनरल इलेक्शन पोलिंग इज गोइंग ऑन और आप देख रहे होंगे हर कोई ऐसे करके फोटो खिंचा रहा है। So what is it reflecting? That yes, we have become aware so much and so that every one of us is participating in the voting system. अब अगर आप वोटिंग करने गए हैं तो पहले अब वोटिंग के सिस्टम को समझते हैं। तो पहले होती थी बैलेट पेपर वोटिंग, अब इसके बाद लाया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। तो अगर आप जैसे थंबनेल में भी देखा होगा आपने, ईवीएम की फोटो लगी है। ईवीएम में अलग अलग कैंडिडेट्स का नाम होता है और जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है नोटा। ठीक है, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। अब नोटा इंडिया में सितंबर 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसमें कि हमारे देन सीजेआई पी सताशिवम थे जजमेंट पे। और उन्होंने बोला था कि if the citizens are not feeling confident like whom they want to vote, they can choose this option nota. अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आइडियोलॉजी ये थी कि वी विल ट्राई टू क्रिएट अ नेगेटिव प्रेशर अपॉन द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के मन में डर आएगा कि अगर वो हमारे पार्टी को छोड़ के नोटा ऑप्शन मार्क कर रहा है तो बेसिकली देयर वोट इज गेटिंग वेस्टेड। तो नाउ द प्रेशर इज दैट पॉलिटिकल पार्टी विल ब्रिंग द बेटर कैंडिडेट, राइट? नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, अभी जस्ट मैंने मेंशन किया था कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके कंडक्ट सही नहीं थे और इसके लिए काफी सारे जजमेंट्स भी रहे हैं, लाइक पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इन सारे जजमेंट्स में कहीं ना कहीं यही बात हुई है कि या तो आप पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड शो करो और या तो इनका कंडक्ट देखो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, राइट? सो मल्टीपल थिंग्स आर देयर व्हिच डिफाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटर। तो इसी बढ़ते कारण से अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब 2014 के इलेक्शंस हुए थे तो उस समय जो क्रिमिनल केसेस थे जो कि हमारे लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट थे, तो द नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस वर क्लोज टू 30%। और यही चीज 2019 के इलेक्शंस में बढ़ के 43% हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि when this election is happening now in 2024, the data is yet to be released. तो बेसिकली जब अभी नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं तो वेरी सून विल गेट द डेटा कि जितने भी लेजिस्लेटर्स इस इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, बी फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वेरी सून देयर डेटा विल हैव टू बी पब्लिश्ड। अब एक और प्रॉब्लम है हमारे इलेक्शंस के साथ जिसके कारण से हम नोटा लेकर आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नाउ आई वांट यू टू टेल मी, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स, डू यू थिंक दैट वी शुड इंट्रोड्यूस education system as a minimum requirement in election? Please drop your comments, right? And the point is, इस कारण से ये नहीं पता चलता कि जो कैंडिडेट है इलेक्शन में उसकी
एजुकेशन सिस्टम कैसी रही है और उसका एजुकेशन फॉर्मेट कैसा रहा है, राइट? वी मे नॉट नो वेदर इट्स 8th पास और 10th पास और 12th पास और इवन अ ग्रेजुएट. So all of these things matters a lot, because when we are into an education system, we study a lot of things, we come into a bigger network, we experience a lot of things which makes our understanding much more better, right? So this is one of the area where you have to tell me your opinion. Second, the problem is now there is a very big ratio of our citizens who do not cast their votes. So even there is a vote, there is a nota vote, but still people are not casting the vote. So this was another reason for which nota was introduced. अब क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें क्लॉज था विच इज फॉर्म 49O. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको वोट नहीं देना है, तो आप जाओ वहां पे फॉर्म 49O भरो, और यू विल डिक्लेयर दैट यू डू नॉट वांट टू गिव वोट टू एनी ऑफ द पार्टी. बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें देर इज नो एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी. सो नथिंग, एवरी डिटेल विल बी क्लियर टू द पार्टी. Now that is why when you are putting your vote into the EVM, your detail will not be discovered by the party. So ये एक secrecy formula को maintain करता है, जो लग रहा था citizens को कि नहीं मिल रहा है. अब इसमें एक डेवलपमेंट और है. अब डेवलपमेंट ये है कि अभी जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 326 हमें राइट देता है वोट के लिए. Likewise, there is also right to not vote, right? Right to not vote. So that is why this nota option is really important. अब ये तो बात हो गई नोटा ऑप्शन के लिए और इसके बैकग्राउंड के बारे में. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें नोटा ऑप्शन से कोई फायदा हो रहा है? अब समझते हैं इसको थोड़े स्टैटिस्टिक्स से. अब जब लोगों ने नोटा पे वोटिंग करनी शुरू की, तो इसमें कई सारे डिफरेंट सिनेरियो सामने आए. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोट गए और उस 100 वोट्स में 80 वोट्स नोटा के हैं, और बाकी बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, वॉट एवर पार्टी, उसमें वोट डिवाइड हो जाता है. तो टेक्निकली वोट हाईएस्ट किसको मिला? नोटा को. तो रिजल्ट क्या होगा? तो लेट्स से कि 100 में 80 नोटा को गए, और 10 जाते हैं कांग्रेस को, 5 जाते हैं बीजेपी को विच इज 95, एंड 1 ईच जाते हैं बाकी अदर पार्टीज को. तो हु शुड विन? क्योंकि यहाँ पे 80 वोट तो नोटा को गए हैं. तो इस केस में क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो नेक्स्ट हाईएस्ट वोट वाली पार्टी है, दे विल विन द इलेक्शन. तो फिर नोटा का मतलब क्या हुआ? इवन दो 80 पीपल शोड देयर डिसइंटरेस्ट इन नॉट वोटिंग, स्टिल वी डिक्लेयर्ड द कांग्रेस, for example, who has got the second highest vote, as a winner of the election. Technically, which means that there is no use of the nota. लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला था, 2013 में पी सदाशिवम जब ये जजमेंट दे रहे थे, तो उनका आइडियोलॉजी ये था कि वी विल क्रिएट अ हेल्दी प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी दैट दे शुड ब्रिंग द बेटर कैंडिडेट, एंड एज दे विल ब्रिंग द बेटर कैंडिडेट, हमें कॉन्फिडेंस आएगा वोट करने में. बट ये नहीं हुआ. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टीज का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं पता. Sorry, the political candidates who are fighting the election, we do not know their education background, we do not know their income sources, and we do not know their wealth assets, and we do not get to know their criminal records. तो कई, इनफैक्ट एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली मेंशन किया था कि आपको सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिश करने हैं. बट टाइम एंड अगेन the breach of judgments have taken place और parties ने reveal नहीं किया है. So this is one of the grounds why nota is not working. Now I have another perspective. This is my personal opinion. So the point is, क्या हमें नोटा का really need है? अब समझते हैं क्यों. For example, you have to vote amongst 2 to 3 parties. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल मुझे बीजेपी को वोट करना है, मुझे कांग्रेस को वोट करना है, या मुझे कोई भी XYZ पार्टी को वोट करना है,
तो वोट करने के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर तो ये है कि आपको उनका मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। आई एम डैम श्योर दैट यूथ स्पेसिफिकली फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 30 does not go through the manifesto of the political party. This really brings a lot of clarity with respect to the ideology which a political party is carrying, which is really important for us to understand to which ideology we belong and we want to support. Along with this, economic development also is very, very important. So we have seen all the times through the time of budget, our eyes are wide open that what will come in the budget for the middle class family, right? We look for the employment opportunities, we look for the social development, and many more. So like this, we should go through the manifesto which really talks about the different kinds of reform, a social reforms, or the social development these political parties are looking for. So this is really important that we have to go through the manifesto. So somehow, if we could start proposing that there shall be informed decisions among the voter rather than becoming andhbhakt, we should become an informed voter. So this will really improvise the situation. We will automatically select the correct party even without knowing their other background. So now the problem happening with the Nota is that if if Nota wins, if Nota wins, as we discussed that if Nota got the 80 votes, तो क्या होगा? तो यहाँ पे डिमांड ये थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लगी थी जिसका डिस्कशन 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब डिमांड ये है कि वहां पे या तो री इलेक्शन कराओ या फिर जो कैंडिडेट ने फाइट किया था उसको अब डिबार कर दो। तो अब इन दोनों केसेस की फिजिबिलिटी बहुत खराब है। तो अगर मान के चलते हैं कि हमने री इलेक्शन कराया, तो री इलेक्शन कराने की क्या पॉसिबिलिटी है कि फिर से नोटा नहीं जीतेगा, राइट? पर्पस क्या है री इलेक्शन कराने का? कि पार्टी एक बेटर कैंडिडेट प्रपोज करेगी। मान के चलिए पार्टी ने नहीं किया और फिर से नोटा जीत जाता है, तो ए देयर इज अ मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज कि एक इलेक्शन कराने के लिए मेनी ऑफिसर्स आर प्लेस्ड ऑन टू द ड्यूटी और कई सारे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अगर वो हमने ले भी लिया और हमने री इलेक्शन करा भी लिया और अगर फिर से नोटा जीता, तो देयर इज नो वे राउंड, right? So that is why Nota does not seem to be a right option or a healthier option, at least I believe, rather than we can choose an informed decision, right? On the contrary, they were saying that the member who is contesting the election and faced Nota, that member should be disqualified. तो बेसिकली इट इज लाइक कि फुटबॉल के मैच में अगर कोई स्टार प्लेयर उतर और वो परफॉर्म नहीं कर पाया या एक नया प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर दो। तो बेसिकली इनफैक्ट वी हैव सीन दैट रोहित शर्मा इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, इवन सचिन तेंदुलकर हैज फेल्ड टू परफॉर्म। सो वी कैन नॉट choose to debar or disqualify the legislators who are trying for the first time. There are many young legislators who are coming up, and it is a need that young people should come into the politics because they are definitely educated and they can bring reforms. And how it is possible? Because if you'll go to the our pre-independence history, a lot of youngsters were involved, at least in the team of Bhagat Singh or at least in the team of Mahatma Gandhi, who really participated and encouraged and gave motivation, which led to our independence movement. So likewise, young legislators are required in the system, and that is why disqualifying the members if they are facing Nota is not a viable option. So overall, अगर अब हम एक overall picture देखें from the very beginning, so Nota seems like a failure. So people are voting on Nota, and even if Nota is winning the election, technically Nota is losing the election. Why? Because the ECI, Election Commission of India, has ruled that second party who has gained more votes will be considered a winner. तो सेम हुआ, अगर 100 में से इनफैक्ट 95 वोट्स नोटा को जाते हैं, तो अगला वोट जो 3 वोट गया है किसी पार्टी को, वो पार्टी विनर बन जाएगी। तो हमने बेसिकली गेम इजी बना दिया बाकी पार्टीज के लिए। So that is why we should understand the dynamics in which we are living. And India is not the first country to apply Nota. Rather, India is the 14th country in the world to start using Nota, which is the negative voting. First, France did, and Bangladesh became the first South Asian country to do it.
right? So but still in France the conditions are different. They prefer Nota, they create pressure on the political party, but in India it's not happening because of the different structure of governance is there. So that is why, you let me know your opinion. What do you think, should Nota exist, and if Nota exists, what should be the modus operandi for the Nota? क्या होना चाहिए अगर नोटा जीत जाए तो, right? What if Nota wins? So please let me know your thoughts, or what is your comment in the section, right? So thank you for all joining, and see you in the next video.